अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त टोरंटो 360 की जानिब से इरफान बाबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और शहर का एक बड़ा मशहूर बिजनेस लिंक जिसको आप कहते हैं बिज लिंक, जो बिजनेसेस को जोड़ता है, ये होने जा रहा है इधर। यहाँ बहुत सारे बिजनेसेस आए हैं। कम्युनिटी में ऐसी चीजें होनी चाहिए, बिजनेसेस प्रमोट करने चाहिए और बिजनेस बढ़ने चाहिए। जितने बिजनेस बढ़ेंगे हमारी कम्युनिटी उतनी ही मजबूत होगी और इस मजबूती की जामन है हमारी फौजिया जी। और इन्होंने आज ये बिज लिंक के तहत ये पहली एक कॉन्फ्रेंस समझ लें, एक एग्जीबिशन समझ लें या एक कम्युनिटी मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम बिजनेसेस का समझ लें, वो किया है और हम आपको इसकी झलकियां वक्तन फक्तन दिखाते रहेंगे। मैं इस वक्त अपने कुलीग साबर गाया साहब के साथ हूँ और मैं फौजिया जी से बात करूंगा। फौजिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। इतना जबरदस्त शो करने का, इतनी जबरदस्त एफर्ट करने का, सोल्ड आउट फुली बुक्ड शो है आपका और बहुत सारे हम बैनर देख रहे हैं जैसे कि नाजरीन भी देख रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिजलिंग कनेक्टिंग बिजनेस मेरी एक ऐसी कोशिश है जिसमें मैंने ये चाहा था कि टोरंटो के टॉप नॉच बिजनेसेस का आपस में मर्ज हो। ना सिर्फ ये कि हम सब खुद अकेले ग्रो करें बल्कि एक दूसरे के बिजनेसेस को भी ग्रो करने में सपोर्ट करें। और आज वो दिन आ चुका है, यानी बिजलिंग 2026, यानी अप्रैल 18 को इस वक्त हम मौजूद हैं अपोलो कन्वेंशन सेंटर में और वक्फे से हम आपको अपडेट्स करते जाएंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे हर किस्म का बिजनेस आपको मिलेगा। बिजलिंग इज बेसिकली वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर नीड्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। फौजिया जी, ये बताइएगा कि आप तो बड़ी कामयाब मॉर्गेज ब्रोकर हैं, ये इतने बिजनेसेस जो आप इकट्ठे कर रही हैं और ये जो लिंक कर रही हैं, इसमें चूंकि आप बिजलिंक की सीईओ भी हैं, आप इनकी ओनर भी हैं, तो इससे आपको क्या क्या फीलिंग मिल रही है, क्या सक्सेस मिल रही है, क्या आपका क्या सेटिस्फैक्शन? जी, बहुत प्यारा सवाल है। थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट इट। मकसद बिल्कुल वही है कि ना सिर्फ खुद ग्रो करना है बल्कि अपने कम्युनिटी में अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को खास तौर पर आगे लेकर आना मेरा मकसद था। हमारे दरमियान आज की शाम आपको कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स मिलेंगे जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। और मकसद एग्जैक्टली वही है कि ना सिर्फ ये कि हम खुद अकेले ग्रो करें बल्कि मिल के अपनी कम्युनिटी को कैनेडियन बेस्ड कम्युनिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया जी, आप बहुत मसरूफ हैं। टोरंटो 360 को टाइम देने का शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर साथ साथ चलते रहेंगे और फिर आखिर में आके फिर आपको जरा आपसे पूछेंगे रात को कि ये कैसा शो रहा। नाजरीन, आप हमारे साथ रहें, हम आपको झलकियां दिखाते रहेंगे, आपसे लोगों की बात कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान बाबा मलिक, टोरंटो 360 की जानब से साबर गाया अपने उस्ताद मोहतरम के साथ। थैंक यू जनाब। इस वक्त हम डॉक्टर शाहिना किशोर जी के साथ मौजूद हैं, शहर की इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, बल्कि लोगों को पढ़ाती हैं लिखाती हैं। मैंने पढ़ी लिखी का लफ्ज तो एक तकल्फन इस्तेमाल किया है, ये पढ़ाने वालों में से लिखाने वालों में से हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आप बिजलिंग की कॉन्फ्रेंस पे आप आई हैं, तो आपके क्या तासरात हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम फौजिया फसी साहिबा ने अरेंज किया है जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी को ये मौका दिया गया है कि वो अपने आइडियाज़ शेयर करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें और एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करें और कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, ताकि हमें एक ही जगह पे बहुत से जब बिजनेसमैन मिल जाते हैं, बिजनेस वुमेन मिल जाती हैं, तो हम शेयर करके हम एक ही जगह पे बहुत सी जो फील्ड है उसको कवर करते हैं। तो माई हार्डली कांग्रेचुलेशंस टू हर एंड थैंक यू टू यू। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम चौधरी निसार साहब के साथ मौजूद हैं और जो कि मीडिया में एक ख़ास मकाम रखते हैं, शहर के पढ़ाई लिखाई में ख़ास मकाम रखते हैं और बड़े बड़े मालूमाती प्रोग्राम, बड़े मुतहर्रिक कम्युनिटी लीडर भी हैं। चौधरी साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं बिजलिंक पे, आप कुछ इसके बारे में भी बताएं और अपने तासरात भी बताइए। इरफान बाबा साहब ने जो कहा वो रिवर्स में इनके ऊपर अप्लाई होता है। माशाल्लाह, ये बहुत एक कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत है। टोरंटो 360 का बहुत शुक्रिया, साबर गाया साहब का कैमरामैन है इस वक्त, बहुत शुक्रिया सबका।
जहाँ तक आज के इस इवेंट्स के हवाले से है कि बिज लिंक जो कि फौजिया फसी साहबा और एक पूरी टीम ने ये एक यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया है, ये बहुत बड़ी बात है और ज़रूरत है इस अमर की कि लोगों को हमेशा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जाए, जितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। और ये एक किस्म की आगे बढ़ने के लिए हमें एक ज़रूरत भी थी सिटी के अंदर। बहुत काम और भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं। आज इनका ये पहला इवेंट है और हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत डिफरेंट किस्म के वर्सटाइल लोग आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे ये लोग आपस में नेटवर्किंग करके कम्युनिटी को फ़ायदा देंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे मेरा अपना है तो मैं साबर गया साहब और मलिक साहब आपकी वसातत से और टोरंटो 360 के वाले से अल मुस्तफ़ा कनाडा एक चैरिटी वर्क में मैं इन्वॉल्व हूँ। वो मेरा चैरिटी वर्क है, वॉलंटियर है। मेरा खुद अपना बिजनेस जो है ई कॉमर्स का है। मैं बिजनेस कोच करता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। किसी का डेड बिजनेस हो रहा हो उसको एनालिसिस उसके एनालाइज करके उसको कोचिंग करके उसको बेचने तक हेल्प करता हूँ। मेनली मेरा कमर्शियल का काम है और बिजनेसेस का काम है। ई कॉमर्स में किसी ने कोई ट्रेनिंग लेनी हो वो मेरे से ले सकता है। मेरे नेटवर्क अमेरिका कनाडा दोनों कंट्रीज में है। वर्ल्ड वाइड जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे मेरे एम्प्लॉइज है। बहुत शुक्रिया चारी साहब। जी तो इसके अलावा ये है कि इस आज के इस प्रोग्राम में मैं फौजिया फसी साहबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इस तरह का अच्छा नेटवर्किंग प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें सारे बिजनेसमैन लोग आपस में डिस्कस करेंगे और अपने अपने बिजनेसेस को भी प्रमोट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब आपके साथ मिलके हमेशा खुशी होती है। आप हमारी कम्युनिटी की जान है, हमारे प्यारे दोस्त हैं। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ और आप अपने आप को जब दूसरे को इज्जत देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत को हमेशा ऊपर लेके जाता है। ये एक हमने देखा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपके अल्फाज का यही अल्फाज मैं आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। मैं एक बड़ा आजिज आदमी। बहुत Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good evening. It's absolutely my true honor and pleasure to start this wonderful evening. So welcome and thank you for joining us tonight for this network dinner hosted by BizLink. It's a pleasure to have such a wonderful group of professionals gathered here. This evening is all about building meaningful conversation, sharing ideas, enjoying great conversation in a relaxed setting. We hope that you all take this opportunity to meet new people, strengthen existing relationship, and make the most of the time together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الضحى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
کوئی خالی My privilege and honor to introduce dear sister Fozia Fasi, a proud university graduate in biochemistry. As a mother, wife, daughter, and entrepreneur, she juggles multiple roles with passion. She is also a writer and firm believer in serving humanity selflessly. Currently, she is leading a business, working as a mortgage agent with Mortgage Architect. As a founder and CEO of BizLink, her goal is to bridge gap between entrepreneurs and aspiring business leaders in our community. Before starting our program segments, furthermore, بہت بہت شکریہ. صفدر بھائی کے بارے میں میں کیا کہوں, بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں. جب یہ اسٹیج پہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو ضرور ان کے بارے میں کہیں گے. صفدر بھائی بہت بہت شکریہ دل سے آپ کا. بزلنک آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. This is famous couplet from Jigar Muradabadi. Translation: I started alone towards my destination. People kept joining along the way and it became a caravan. Good evening and assalamu alaikum everyone. My name is Fozia Fasi and I am the CEO and founder of BizLink Connecting Business. Today it is truly my honor to welcome each of you here. Thank you for taking time out of your busy schedules to support this vision and support one another. The purpose of this gathering is simple yet very, very powerful: to connect, to know each other, and to make the most of this BizLink platform. A platform created specifically for people like you in this room. I am deeply humbled to be joined by so many inspiring leaders today, including the most respected Mr. Khalid Usman. Can you give him a big round of applause, please? And in fact, if I say everyone's very favorite Dr. Shaina Kishore Sahib. The truth is, individually, we are all doing good work. Of course we are. That's why we are here. That is why this is called networking event, because you all are here, but collaboratively we can touch the sky. BizLink wants to leave a legacy for our next generation and take our businesses to the next level. Let me take you to the next level. I want to provide BizLink as a catalyst to elevate your business. I, Fozia Fasi, am not BizLink. In fact, Mohammad Ansar, Dixie Electronics and Appliances, Mr. Kamran Qureshi, Dr. Khalil Ahmed, Hamad Hadi, Karahi Master, Asma Wasim, my beautiful friend, ProTag, SkyTag, they are all BizLink. Can you give them a big round of applause, please?
let's talk about how to promote businesses on mainstream media and other social media platforms. As you all know, आजकल का दौर social media का दौर है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जो promotions हम social media पर इस वक्त अपने businesses को दे सकते हैं वो remarkably, excellently good हैं. BizLink wants to see our businesses on mainstream media like CP24 wants and 680 News. Collectively, BizLink can and will do it. I want to share with you all a little research जो कि मैंने की सोशल मीडिया के बारे में और मेनस्ट्रीम मीडिया के बारे में और रेडियो स्टेशंस के बारे में. The most viewed channel you all know is CP24, and CP24 is GDA's primary source for breaking news, which possesses a massive integrated audience reach across television, digital and social media platforms, with its news content available in approximately 3 million households. As of today, it is ranked as #1 digital news publisher in GTA, heavily influencing news consumptions in Canada's largest population center. सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल CP24 है. जैसे कि आप सब जानते होंगे, हम डेंटिस्ट ऑफिस जाएं, हम क्लिनिक्स जाएं, किसी भी ऑफिस जाएं, इवन घर से निकलने से पहले हमारी कोशिश होती है कि हम CP24 लगाएं. क्यों CP24 इतना हाईली रेटेड चैनल है, क्यों उसके ऊपर एड लगाना इतना मोस्ट एक्सपेंसिव है. ओके, नाउ फर्दरमोर लेट्स टॉक अबाउट 680 न्यूज रेडियो चैनल. 680 News Radio is a major all-news radio station in Toronto that do you know that serve over 1.3 million weekly listeners? 1.3 million weekly listeners has 680 News ke. Nowadays, social media is very popular and powerful platform for news and business promotions. You know what? There are 4.8 billion social media users worldwide, representing 59.9% of global population of all internet users. इनकी reach इस वक्त इतनी ज्यादा है कि seconds में आप millions and millions के views को get कर सकते हैं. Okay, do you guys ever think, have you ever thought about taking your businesses to that level? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि हमारे businesses इस level पर जा सकें? We need to go to a national level. I really want my Canadian Pakistani businesses to become a national level business all over the Canada. I'm convinced that we need to go to national level, of course. I'm convinced that together we can achieve greatness. I would love to have your continued support to make BizLink a huge success on national level. Let's grow together. I really want to say thank you to all the media partners here, all photographers, videographers, and volunteers, and all the people who worked really hard to make today's event possible. Before proceeding the programs further, I would like to call my co-host for tonight, Mr. Mansoor Mirza, on stage. Please give him a big round of applause. Assalamu alaikum, good evening. It's my honor and it's my pleasure to have all of you sitting in this hall, and it's my honor to stand here as a co-host of a great community leader for the FSC. I remember those days, I should say 5 to 6 months ago, when the original, I should say the embryo of BizLink was getting into being. How even the logo was designed and how she was paying attention to every single thing, even the spelling, designing every single spot. So I am one of the witness, among others who are supporting her, that throughout this journey, it was an honor and pleasure to support you and help you. And I have seen in the past, and events like this and events in future, she is doing always an amazing job, and I can see that in future, a great success is on his way. So thank you for doing this.
would like to ask one question from all of you. Just look around. How many smiling faces you can see? Okay, another question. What do you think, how many times a small kid smile per day? Any guess? 400 times. And we were the same kids, right? When we were little, we used to smile that much. How many times we smile now? See, now you're smiling. Only 20 times. So what do you think? What made us become like this, that we hardly smile? Because we are not living in a moment. I have traveled more than 50 countries, and I have met many people around the world. And the best thing which a person can do from distance is a smile. Before you start any communication, this is the first thing you notice in a person, because you carry your energy wherever you go. Even before you enter the room, your energy is always before you. So I would like to share some secrets. Who wants to learn? No one wants to. Nobody's interested. I think I should go. Yeah, I want to hear that enthusiasm when you were kids. Yes! Okay, I would say 1, 2, on 3. If I hear a loudest yes, then I will share those secrets. 1, 2, 3. Very good. One more time. 1, 2, 3. Yes, now I will share. Okay. The first thing, how do you feel when you don't sleep in the night properly and you have a very important meeting in the morning? How do you feel? Lethargic, low energy, feels like having burden, right? You don't even feel like having breakfast when you don't have enough energy. Okay. How do you feel when you're rushing for your meeting and you skip your breakfast and you hardly eat and then you're sitting in the meeting? How would you feel? Exactly. And how do we breathe when we are angry? Right? Shallow breathing. So there are only 3 things. If you focus, your energy will go 100%. Side. Okay, and left hand on your belly. Left hand on your belly. Okay, let's see. Right on your chest, left on your belly, and take a long, deep breath from your nose. Inhale. Let's do it together. Inhale. Exhale from the nose. One more time. Inhale. And if you feel your upper hand is moving, raise your hand. If your upper hand is moving while breathing, raise your hand. How many of you breathing from the chest? Raise your hand. Very good. Very nice. I don't understand this. You have to raise a little bit higher. Okay. So clap for yourself. Who were breathing from the chest, they all were doing the wrong way. So the right way is to breathe from the belly, because scientifically it's proven when we breathe from the belly, our diaphragm is pressing downwards, so your belly should expand. This is how the small babies are always breathing. So do me a favor, when you go home, search on YouTube how to breathe from the belly. And I'm telling you, 80% of your problems will be solved. All your joint pains will go away, your sleep pattern will become really good, you will increase your happiness, you will be smiling more. Okay, done? Sorry? How to breathe? Okay, let me show you. See? Just observe my upper hand. See? Can you do it now? Just try it. Okay, the second thing is, the first homework is done, okay? And the second is your sleep. What time, how many of you sleep before 10 o'clock? How many of you go to sleep before 10? Oh my God. You need to go to army camp. So you're supposed to be sleeping by 10. Why? Because our pineal gland only works in the darkness before sun rises. It stops working when the sun is rising, and this is the reason a lot of people who sleep on weekends, when they sleep very late, oh, subah to Sunday, it doesn't matter, right? And they get up very lethargic. They're always like this. They don't even,
they're never 100%. So try to sleep before 10 or maximum 10:30. Get up 5 in the morning and just do your research. What time all the top 35 richest in the world, they get up at 4 o'clock every day. We are meat lovers, right? But let me tell you, meat takes 7 to 8 hours to get out of your system. That's why you should never eat only more than twice a week in your food. Only twice a week. Try to go for more vegetables and fruits, but because it has life like oxygen. It has prana, which is called qi in Chinese. So people who are eating more seafood and vegetables, they live longer, they stay healthier, their mind is always present moment. Normally our brain is either swinging between past and future, past regrets or future anxiety, right? So the only thing which will bring you to now is your breath. Because like we control the kite with a thread, you can only control your brain with a breath, right? So I know we have very less time, so I'm going to just end here because I don't want to take anybody's time. So a huge applause for Fawzia and her team for organizing such a beautiful event, and for you too. Thank you. Now it is my honor to invite our next guest speaker. And our next guest speaker is no stranger to all of us sitting in the room. It is an honor to introduce Khalid Usman Sahib, a distinguished chartered professional, accountant, and a dedicated community leader with over 50 years of service. He is a founder of multiple charitable organizations that have raised millions of dollars for healthcare, education, and global humanitarian efforts, having also served as counselor for Markham for many decades. He has shown strong commitment to public service, social justice, and community unity. His remarkable contributions have earned him numerous prestigious awards, making him a truly inspiring figure. Please join me in welcoming Khalid Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawzia, आप कहाँ जा रही हो? एक सेकंड. It is such a great honor to be here today. You know, it's easy to talk about interlinking and bringing people together, but today is an example of, I am so proud that finally a young couple, Fawzia and Fasi, where are you Fasi? आप भी आ जाओ भाई. कम से कम ताड़ियां बजवा दें आपके लिए. Please give them a big hand, because what they've done today, it has not been done in our community. I've been here 50 years or more. This is the first time somebody dedicated like them have actually done. Today, when I came, the first thing I wanted to see was how did it all turn out. And I tell you, amazing job. Thank you. So keep it up. This is just a start. And inshallah, I'd like to see us on the, what is that channel? CP24. Oh, yes. Well, you know, it's such a amazing thing that you have called me after such an interesting speaker of yoga. And what, people want to hear about accounting? And they say accountants are the most boring people in this world. But you can add color. Oh God, okay. Your personality can add color. Thank you, Ji. Well, you know, that's why I chose the topic, which is basically, a lot of people think they're doing very well in business and their sales are up, but they're still not doing well because they can go under. And I'm going to share that with you. Okay, how can you be doing great in business, but yet you are losing the company or losing the business or going bankrupt? Because sales or revenue is one thing, but cash is king. So you may be selling and you may be increasing sales and you may be happy,
that, oh my God, my business flourishing, but because of few things that you cannot control, you're going under because your cash flow is so bad. And I have a live example. One of my friend, my client, who was in real estate, not this year, not this time, but in previous recession, they had properties worth multi-million, like few hundred million. So how can you say that this guy with few hundred million is going to go bankrupt? But he did. And the reason was because his cash flow was bad. And I, as his accountant, kept telling him that, listen, get yourself cash flowing in, because without the cash, you cannot survive. You have to pay taxes regardless. You have to pay salaries. You have to pay all those commitments that you have, and your money is stuck in inventory or your receivables or your other, you have to pay government taxes. So the important thing that the message is, for any business, that yes, increase your sales, look everything, but make sure you monitor your cash flow once a week, not even once a month. Just follow it. Follow how the cash is flowing, because the more money you have in your bank, the more successful you'll be. So you could make a lot of money in profit, in bottom line, but you will not be actually making money because your hands are tied, because you've given out either, depending upon what industry you are in, you could be putting in a lot of money in receivables. Or, as I said, it could be that your commitments are there, you have to pay taxes, you have to pay everything, but yet you're not receiving. So when a lot of people do the sales on account receivable or 60, 90, 120 days, you should look at it, whether your business can afford it or not. So I'm going to make it short. I can talk on this for a long time, but I think the important thing, bottom line for any business, is watch your cash. That's the bottom line. Watch your cash. Not the profit, not the book profit. It's the cash that in your bank. If you have it, you're king. If you don't have it, bye-bye for yoga. So we'll all be looking for you, Sadara Khan, coming and getting some yoga lessons from you. Much richer. But anyways, I think with that I'm going to say that I want to thank you for the opportunity. You've been a great audience. But I think what we need to do as a community, as business people, we need to support young people like Fawzia and the initiative they've undertaken. It's not just one-shot deal. It is that the more we support her, the more, as a matter of fact, today practically, I ran into 2 or 3 businesses where I was able to network with them. So that's a great example. If in one evening you can meet 2 or 3 people that can give you business, I think it's amazing. So I want to thank you for it. थैंक यू सो मच मिस्टर खालिद उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज़ है इन जैसी शख्सियत के लिए। और इनके बाद अब जब मैं स्टेज पे, अब जिस खूबसूरत सी शख्सियत को मैं नेक्स्ट स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ, आप सबकी ज़ोरदार तालियों में, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हम सब की हर दिल अजीज़ डॉक्टर शाइना केशवर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। First of all, I am so grateful to Fawzia Fassi for arranging such a wonderful event, and we can see it's a dedication, devotion and passion that all business communities here, and BizLink is, very successful event. It will go, and I appreciate her all effort and hard work which she is doing. In community, there are so many gatherings, so many functions, but since last 7-8 years, I'm attending her functions. She does a great job, and she needs a lot of praise and appreciation, and her work is commendable. So BizLink is doing a great job, and Fawzia Fassi, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो प्लेटफॉर्म चुना है, इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है, और जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, आप सबका जो
کام ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں, لیڈرشپ ہے, کمیونیکیشن ہے, ٹرسٹ ہے, ساری چیزیں جو مل ملا کے ایک کامیاب بزنس مین جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ سب کو, اور سب سے زیادہ میں جتنے بھی اسپانسرز ہیں, میں فوزیہ فصیح جی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی میں سلیوٹ کرتی ہوں کہ یہ جو اسپانسرز ہیں دے آر دا بیک بون آف دا اینی ایونٹ. سو آئی اپریشیٹ یو اور کنگریچولیٹ یو. ہمارے اسپانسرز ہمارے لیے کتنے خاص ہیں آپ سب کو اس بات کا بالکل اندازہ ہوگا. کوئی بھی پروگرام اسپانسرشپ کی کنٹریبیوشن کے بغیر اور اسپانسرز کے کنٹریبیوشن کے بغیر ناممکن ہے. میں شائنہ کشور صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ ہمارا پہلا ایوارڈ جو کہ جاتا ہے سر خالد عثمان کو, کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پریزنٹ کریں. Thank you so much for this recognition. As a matter of fact, when I see our community, mothers, our sisters leading the businesses, I feel pride. And thank you so much for giving this honor this evening. And I wish you the best of success. One thing I can assure you, if we do something good, especially our female members of the community, the whole community will stand with her to take the community to the next level, inshallah. Thank you. In a world where mercy often feels missing, you helped bring it back. Through your zakat, mercy became clean water for villages, freedom for families trapped in bonded labor, a future for children where dreams were no longer out of reach. The Quran carried not just in hands, but in their hearts. Sight restored, hunger answered with warm meals and food parcels, and it all began because you chose to let mercy move. Good evening, everyone. It is an honor to be here at BizLink with such hardworking and focused people. I'm here as an e-commerce business owner and representing Al Mustafa Canada. You already watched the movie. Everything is covered there. I just want to say thank you very much for the opportunity. And the work you are doing is wonderful. Stay connected, stay tuned, stay with BizLink. Wonderful team. And if you have any questions, I'm here. My own business is e-commerce. I know this is the BizLink platform. A lot of people are physically working, they have the companies. But if somebody wants to learn and understand how the e-commerce business work, ask me questions. And there is a website I just want to share with you, Enabler. They are very focused. They have very great opportunity for the business learners. If you want to learn, join them. And if you have any question, ask me. Please support Al Mustafa Canada. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. فوزیہ فصیح ٹرولنگ کے نشانے پر بھی ہوتی ہیں اور ٹریولنگ کے بھی. کسی تقریب میں نہ ملیں تو سمجھ جائیں کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہیں. اور ان کے بلکہ ہم سب پاکستانیوں کی ٹریولنگ میں یہاں کینیڈا سے ساتھ ہوتا ہے الماس راشد کا میچ لیس ٹریول. اور ایک نام تو یہاں بار بار گونجا ہے, ایوارڈ بھی لے کر گئے ہیں. کینیڈا میں اکاؤنٹنگ, آڈٹ اور ٹیکس سروسز کے بغیر بزنس مینوں کا گزارا نہیں. یہ کام ادارے بھی کرتے ہیں اور گھروں میں بیویاں بھی. اس حوالے سے خالد عثمان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. کینیڈا میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں گھر خریدو یا کرائے پر لو 3-4 اپلائنسز مفت مل جاتے ہیں. باقی اپلائنسز کی ذمہ داری سلیم چودھری صاحب نے اٹھا رکھی ہے. ڈکسی روڈ پر اگر کوئی پاکستانی کاروبار سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ سلیم چودھری اور ان کی ڈکسی الیکٹرانکس اپلائنسز ہے. یہ آپ کا گھر ایسے بھر دیتے ہیں جیسے جہیز ملا ہو.
पाकिस्तानी दीवारें गंदी करने के मामले में मशहूर हैं, मगर जकरिया मुजाहिद होम पेंटर सर्विसेज के लिए मशहूर हैं। ये कहते हैं, मुझे दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। कोई भी वॉल उनके हाथ लग जाए तो वो गंदगी से पाक हो जाती है, चाहे फेसबुक की वॉल क्यों ना हो। बैरिस्टर और सॉलिसिटर ना हो तो लड़ाई झगड़े कैसे हल हों, हमारे वकील सफदर हुसैन इस मामले में माहिर है। पाकिस्तान में होते तो यकीनन इमरान खान उनकी खिदमत हासिल करते। बासमती चावल के सबसे बड़े व्यापारी शहरोज चौधरी, मुफलिसी में सिर्फ आटा ही गीला नहीं होता, कभी कभी चावल भी गीले हो जाते हैं। इसीलिए पकवान बासमती सबसे बेहतर है। इसे शौहर भी उबाल सकते हैं, बशर्ते के बीवी में उबाल ना आया हुआ हो। खैर, यहाँ इतने बिजनेसेस हैं और इतने बिजनेसमैन हैं कि रात बीत जाएगी मगर हमारे बिजनेसमैनों का जिक्र खत्म नहीं होगा। अब अल्ट्रासाउंड भी हमारे पाकिस्तानियों के हाथ आ चुका है। डॉक्टर खलील अहमद कैनेडियन अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इनके लिए ज़रा एक ज़ोरदार तालियां। और साथ साथ इनसे पूछना है कि क्या हमारे जनरल्स का भी अल्ट्रासाउंड मुमकिन है। क्रिकेट के बगैर पाकिस्तानी नहीं, ब्रैम्पटन क्रिकेट चैंपियनशिप फैसल मुरीदीना साहब की सरबराही में क्रिकेट चला रही है और कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी से ज़्यादा अच्छा चला रही है। तो ख़वातीन हज़रात, बहुत लोग और बाकी थे लेकिन वक्त की कमी का एहसास, तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। शुक्रिया। Assalamu alaikum and good evening. It's beautiful evening. Thank you. Today I have a honor of preaching in this ajrak. This ajrak is a symbol just like our symbol, our rich Sindhi culture. And you know, this is our too much is just you can see in online and everything. Our Sindhi culture is too rich, too rich. And this is our ajrak. Is so many kinds of us. We are, you know, something like pride and respect in this ajrak. May it always remind us of our unity and unity. Thank you so much. Heritage and unity. Thank you so much. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Yeah, thank you so much, Sister Fauzia and BizLink, for inviting me and giving me a chance to see and meet with so many professionals, so many friends. That's a great privilege. I truly appreciate all that. Say that networking is not just giving cards to each other. Networking is something that we build lifelong relationships with each other, then we build trust with each other, and then we can work together and we all can grow together. That's the whole purpose of networking is. And networking is a relationship where we need, before we need each other, we start networking. Because I'm in mortgages, so I give you an example. Say if a new immigrant, they decide to purchase a property, I think the first thing they do, they look at the health of their accounts. Maybe they meet with the accountant, get the advice that everything is in line, they're not owing any taxes, their financials are strong, and then the next step they come to us in mortgages, where we, as a doctor, we conduct their financial surgery on them, and we give them a thumbs up, and then they go to realtors. Any realtors, our friends, they can take care of that, and then they go to the
and then obviously insurance. So even one transaction can connect many professionals together. So that's the advantage of this networking, and you have done an amazing job by doing that. Now, I was asked to touch base on the topic that there was lots of uncertainty in the last 3-4 years, and that's one word which can explain in the last 3 years that uncertainty. Certainly, yeah, that was the one word which can explain, and that happened, if we go a little bit back, that happened in the COVID time when the rates went down to the bottom level, almost 0.25%, and the banks were offering 1%, so almost halal mortgages, no interest. But then what happens because of the other issues, the supply chain and other things, the inflation went up, the rates went up, and then the lending cost increased, and that caused this whole issue. And plus there were some global issues as well, like Russia-Ukraine war, some tariff issues. But now we can see some positives there. We can see that now we have a majority liberal government, stable government in the country. We can see that there are some changes for the first-time home buyers. They can have a 30-year amortization. They can go up to 1.5 million purchase, plus HST rebate, some drop in development charges, the good prices, and that's bringing the first-time home buyers out. We can see a lot of traffic now in the builder offices. So this kind of event gives us a chance to adopt the change, to build our relationship so that we can all work together. And yeah, thank you so much, and I truly appreciate it. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. My name is Sharif Sabawi. I'm the MPP for Mississauga Iron Mills and the PA for the Minister of Labor, Immigration, Training and Skills Development, Mr. Bachin. And as you can see, part of our portfolio is work, jobs. Our job to make sure that people have jobs. And part of those jobs is to have a strong small businesses. Business to businesses relations actually create business and create jobs. That's why, like events with networking like this event, and I would like to thank Link and Fawzia for doing lots of work to connect businesses together. And Ontario economy, 80% of Ontario economy is small businesses, not the big businesses. Medium and small businesses are the biggest. And the connections or the network is number one, because when there is a trust, there is more business. Nobody would give business to company, just he read it in the yellow pages. Nobody buys businesses that way. So it's important to build this relation, this network, to be able to embrace the local businesses, the ethnic businesses, the network, the local network. And now we have very strong ethnic communities. We have a strong Pakistani business community. We have a strong Indian community network business, Arab community network, Turkish community businesses, and that's actually helping overall Canada. So that's why I'm very happy and honored to join today in this network event, to make sure that we not only network but also recognize and celebrate the success of the communities and success of the business in the community. So thank you very much for your efforts, and I have a token of appreciation on behalf of myself, Premier Doug Ford, Government of Ontario. I thank you, and I encourage you to do more, because that's how can we grow the businesses. And just FYI, Premier Doug Ford is going to be in Mississauga 28th of April. Thank you. आज हमने मुनक्कद किया था अपोलो कन्वेंशन सेंटर में बिजलिंग नेटवर्किंग इवेंट, और जितने तमाम हमारे बिजनेस पर्सनालिटीज़ ने आज हमें इस इवेंट में ज्वाइन किया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और तमाम हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सर्स, हमारे डायमंड स्पॉन्सर्स, हमारे चीफ गेस्ट जो भी तशरीफ़ लाए थे, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कनेक्ट रहिए अपने तमाम बिजनेस प्रमोशंस के लिए। मुझसे कनेक्ट कीजिए। मेरा नाम है फौजिया फसी एंड माय नंबर इज़ 416-464-7841। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे बिजलिंग इवेंट प्रोग्राम में आज आने का।
میں تہہ دل سے مشکور ہوں اپنے تمام اسپانسرز کا، اپنے تمام شرکاء کا جو اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے ایونٹ میں آئے اور انشاءاللہ اٹس اے اسٹارٹ اینڈ اٹس جسٹ اے بگننگ اینڈ ویل کیری آن ان دا فیوچر انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ایک مرتبہ پھر ارشد بھٹی صاحب کا اور 360 چینل کا، جنہوں نے ہمیشہ میرے ہر ایونٹ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے اور ہمیشہ میری پروموشنز کے لیے وہ تیار رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیمرہ مین صابر گایا صاحب کا، جو ہماری ہر محفل کو 4 چاند لگا دیتے ہیں اپنی موجودگی سے. بہت بہت شکریہ. تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے. انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک. عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکویٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ، کھانے، فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے. روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع. وینڈرز کے لیے سنہری موقع. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے. فری انٹری، فری پارکنگ. وینڈرز اور سپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777. It's 416-710-6677. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے. الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے.
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale.
We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416